हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सपना और आज मैं लाई हूँ एक और काफ़ी रिफ्रेशिंग होम डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो। सो क्या है आज के वीडियो में इतना रिफ्रेशिंग, जानने के लिए कीप वॉचिंग। ओके सो फ्रेंड्स, आज हम एक लिविंग रूम का रीमेक करेंगे। एक्चुअली आई विल जस्ट रीडू माई लिविंग रूम टुडे। सो काफ़ी टाइम से मैंने अपने लिविंग रूम को क्रिसमस की थीम में डेकोरेट किया हुआ था। आई वाज जस्ट लेजी टू चेंज इट। सो फाइनली आई हैव चेंज्ड द होल लुक ऑफ माई लिविंग रूम। काफ़ी सारे टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप कैसे एक पूरा नया लुक, एक फ्रेशनेस अपने लिविंग रूम को दे सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं टू लिफ्ट द मूड ऑफ योर रूम, योर होम। सो उस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज की वीडियो में एक गिव अवे भी है जो मैं अनाउंस करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मे बी समवेयर इन बिटवीन, आई डोंट नो। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। Hi lovely friends, so you guys have already watched this particular video of the Christmassy living room decor which I shared during Christmas last month slash last year, last to last month actually. But my room is still a little Christmassy. I have not changed the decor except for a few changes here and there. So today I'm gonna be freshening up my living room. I just did that corner and I'll share with you what I did on that corner. Let it be like a little surprise. So anyhow, I am going to change all of it now. So stay tuned and watch the video till the end. These are the cushions, the covers that I have taken out. These are the Kashmiri ones which I got from Delhi Heart. Very beautiful. Will complement with these and these. So friends, सारे cushions को अपने fillers में सेट करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग द अरेंजमेंट. सो फर्स्ट आई यूज दीज वेरी कलरफुल ब्राइट कुशंस विद माई ब्लू रीडिंग चेयर्स. सो बिकॉज द चेयर्स हैव अ प्लेन प्रिंट, सो प्रिंटेड कुशंस लुक रियली नाइस. और इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है एंड दीज आर फ्रॉम प्योर होम लिविंग एंड आई रियली लाइक अ पॉप ऑफ कलर ऑन प्लेन काउचेस और चेयर्स. After that, ये जो कश्मीरी cushions हैं which I got from Delhi Heart and I absolutely love them. I complemented them with these green cushions which also has some embroidery on it. These green ones are from Pure Home Living again. And of course square को मैंने rectangle के साथ combine किया है and फिर मैंने ये बीच में cushion लगाया which I eventually changed to something else. Here I combined the same Kashmiri cushions with very plain, very light green cushions and also some smaller ones of 12 by 12 which were very bright and they absolutely look stunning. For this couch I just placed the cushions like you saw and मैंने यहाँ पे कश्मीरी runner which is actually a table runner, मैंने इसको सोफ़ा के ऊपर रखा है as a sofa runner, couch runner, just because मैंने कश्मीरी cushions लगाए हैं. So I thought a कश्मीरी runner if I had, why shouldn't I just place it and make everything look more cohesive. And then I replaced that one with this bohemian cushion which I found more complementing to the colors and the vibe that was going on. So after that I had these two extra boho cushions which I placed on the rug. The rug is also bohemian and I just placed it like so next to the center table and this is how it is. So friends, cushions are arranged, right? But you guys can see that this space is still looking a little dull, a little bland. So let's deck up the place now with some real fresh flowers, some plants and some other decoratives. So let's get going. So guys, अभी मैं आई हूँ फ्लोरिस्ट के पास कुछ फ्लावर्स लेने, फ्रेश फ्लावर्स. So आज मूड है कि फ्रेश फ्लावर्स लगाए जाएं and मैंने लिया है, ये कौन सा है भैया? डेजी. और एक वो बुके which has a mix of flowers. ये मत डालो फो. अब गाइस मैं दूसरी जगह आई हूँ. एक्चुअली वहाँ उन्होंने क्या किया था, लॉट ऑफ ग्लिटर लगा दिया था फ्लावर्स में which I hate. सो मैंने वो सारा हटवाया ग्लिटर एंड ये कलर भी जो था जरबेरा में पिंक ही, इतने ही फ्लावर्स थे, नहीं तो मैं नया बनवा लेती. एंड अब मैं ले रही हूँ कुछ रजनीगंधा which I love and I'll combine these and put it. चलो घर चलते हैं. आई विल डू द डेकोर. सो फ्रेंड्स, कुछ मैंने निकाले हैं अपने डेकोरेटिव, सम फ्लावर्स, रियल फ्लावर्स जो मैं लाई हूँ. एंड लेट मी सी हाउ आई अरेंज सम ऑन द सेंटर टेबल, सम हेयर एंड देयर. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so friends, I started arranging all the decoratives and the flowers. So these were the real flowers, the bouquet that I got, and I split it into two halves.
cost effective भी पड़ा मुझे ये bouquet. Otherwise individual sticks were really really expensive. So this bouquet just costed me 350 rupees, and I just split it into two, and I had similar flower vase, so I just arranged them in those. Then I had this real spider flower plant, one of my absolute favorite, most pretty looking plant for your decor. I placed it in a stand that I had. और ये जो wires है ना, इसको ऐसे ही planter के अंदर ही कहीं छुपा लो, which is a great hack to hide these obnoxious looking wires. Then came the coffee table. I placed a jute mat, a little flower basket that I had, basically artificial flowers, and some glassware which I had in my collection. I also placed those books and two shells. Basically just be as creative as you want to be and try and match the theme, the pieces all together, just keeping in mind what you want. I wanted a lot of colors and a mix of nature inspired plants and natural flowers, and then different textures being mixed together like I did in case of the cushions. And this is how the living room looks like right now. It's colorful, but it's not over the top. Everything is balanced. And these two flowers that I got, the daisy and the rajnigandha, I mixed them together, and I also arranged them in the the tall flower vase that I had. For my dining table also I did something, like I'm still waiting for my new dining table to come. It's taking time, but abhi jab tak purana hai, I just put a nice mat on it, sorry, tablecloth on it, and some little bit of decorators in the center. Just kept it very functional and simple. Later I also added this Son of India plant along with the spider. Now there are two plants and they're looking absolutely beautiful. So a lot of foliage in your interior will add a lot of life and just spice up the whole place. And let me show you guys this quick look with close-up shots of how the living room is looking. It's looking absolutely fresh. वैसे भी मार्च के बाद spring start हो जाता है, so this is sort of a spring combined with a little bit of wintry theme that I went for, with of course colors and some rustic elements. So, and this console is looking beautiful. Actually I placed this console in the corner of the living now because of the dining table that is going to come, and then just decorated it a little bit with some pieces that I had. So the trick is to combine your pieces. The trick is to combine different colors. Trick is to combine prints and patterns and textures. So don't just go with same kind of thing everywhere. So if you have cushions, combine the sizes, combine the prints, combine the textures. Flowers, maybe combine the flowers. Decoratives, maybe combine glassware with the metal and stuff like that. Use a lot of lighting through lamps, through chandeliers, through stuff like that. So just combine a lot of elements and you will always come up with some amazing decorative themes and ideas, and will always freshen up your living space. So this is what I had to show you guys as to how I updated my living space for the spring season, you can say. And now it's time to announce the giveaway, so please listen to all the instructions very very carefully. सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू अनाउंस द गिव अवे. सो गिव अवे है आज की वीडियो में, जहाँ पे मैं देने वाली हूँ 2 लकी विनर्स को बहुत ही ब्यूटीफुल होम डेकोर से रिलेटेड आइटम्स. क्या होंगे वो आइटम्स? लेट इट बी अ सरप्राइज, बट इट्स डेफिनेटली रिलेटेड टू होम डेकोर. सो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. कमेंट में आपने मेंशन करना है कि यू हैव सब्सक्राइब्ड, लाइक दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आपके विनिंग के चांसेस भी मैक्सिमाइज हो जाएं. सो जस्ट सब्सक्राइब, कमेंट दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड एंड यू हैव शेयर्ड माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, and wait and watch for the result, which I'll announce very soon.